In last lecture, we discussed syntax of realloc function. It it is used to expand allocated memory space. Means first, what we have to do, we have to allocate memory to the pointer variable by using either malloc or calloc function. And the memory allocation, if you want to resize that memory space, then we can resize it by using a realloc function. Realloc stands for reallocation. That means it is used to reallocate memory space to the existing pointer variable. Syntax is same. Pointer variable equal to int star realloc. Then two parameters we have to pass. First one is pointer variable, which points to the existing memory space. That pointer variable we have to pass as a parameter. Then second parameter will be new size that we have to pass here. Okay. Then see what is the limitation of realloc actually. If you reallocated memory space, then what happen? The data which is at current location may be lost. जो डेटा करंट लोकेशन में रहता है वो लॉस होने के चांसेस रहते हैं if you reallocate memory space then. Okay, suppose if you want to suppose initially you allocated 10 bytes memory space to the pointer variable, and after some times if you want to increase that memory space up to 20, and suppose on that time there is no 20 bytes memory space in the memory. Okay, then in this case what happen, compiler will reallocate that memory, or compiler will allocate 20 bytes memory space at another location in memory space. Then in this case what happen, the data which is at existing location may be lost. Okay, मतलब क्या होगा, 10 बाइट्स की मेमोरी स्पेस हमने अलोकेट की है पॉइंटर वेरिएबल को, और नेक्स्ट टाइम हमें लगा कि नहीं, आई डोंट वांट 10, आई वांट 20, मुझे 20 चाहिए. Then 20 bytes memory space we are trying to allocate by using realloc function. But suppose that much memory space will not in the at that location. Then compiler क्या करेगा, दूसरी जगह सर्च करेगा कि कहाँ 20 bytes का मेमोरी ब्लॉक उसको मिलेगा. देन वहां जाके वो क्या करेगा, 20 bytes मेमोरी स्पेस allocate करेगा. लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्पेस में जो डेटा है उसका क्या, तो डेटा लॉस होने के चांसेस रहते हैं, एंड दैट इज लिमिटेशन ऑफ realloc. May be loss of means data may be loss. लेकिन सपोज उसी जगह 20 बाइट्स का मेमोरी स्पेस है, देन वहाँ डेटा लॉस नहीं होता है, उधर ही मेमोरी एक्सटेंड की जाती है. ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर. Then we have to see example on realloc. For that we have to write one question, then I will give demonstration. Write down question. Write a C program. Write a C program. Am I audible? Hello. Yes, sir. Okay. Write a C program Yes, to sir. accept n numbers from an user. To accept n numbers from an user. N numbers from an user, comma, store them into the memory. Store them into the memory, comma. Sorry, full stop. Full stop. Store them into the memory, full stop. Accept m more numbers. Accept m more numbers from an user. From an user. From an user, comma, store them into the memory. Store them into the memory, full stop.
full stop. Display all the numbers n plus m. Display all the numbers, that is n plus m. Okay, we have to write solution for that. First you have to try n number accept करो by using malloc function, memory allocate करो, then again new size accept करो. Okay, then new size accept करने के लिए आपको existing size भी consider करनी है. If existing size is 10 and new size suppose आपको 10 से increase करना है, तो 10 plus 10 कितना हो जाता है 20. In this way we have to remember. मतलब existing size 10 bytes है और आपको 20 बाइट चाहिए, तो न्यू साइज आपकी क्या होगी 20. तो 20 मतलब आप कितने नंबर एक्सेप्ट कर सकते हो 10. Okay, screen is visible to all. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Hash include dio.h. Hash include dio.h. Remain. Then require variables I comma n comma m comma pointer variable p. Then clear screen. Then print a first, that is how many. Allocate memory to the pointer variable by using malloc function. In star malloc n into size of int. Then accept n numbers from n user. And a percent d. That is n number we are accepting from n user and we are storing them into the memory. Then after that what we have to do, we have to accept new size. That means how many more numbers you want to store, that first you have to take. कितने आपको नए नंबर यूजर से लेने हैं, हमें कितने लेने हैं m, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्लैश n. Hello, sir. यस यस Sir, how many के बाद scanf आएगा ना? यस सॉरी मैं लिखना भूल गया. संडी. Yes, very good. Then how many more numbers? कितने आपको ज्यादा नंबर चाहिए? Then that value I am taking in variable m. Name. Then again we have to reallocate that memory space by using realloc function. Then we have to write here realloc. Then existing pointer variable जिसकी size आपको extend करनी है, वही variable आपको यहाँ pass करना है. That is nothing but p. Then what is new size? देखो यहाँ new size क्या होगी? Existing size is n. कितने आपको ज्यादा नंबर एक्सेप्ट करने हैं, that is m. So total size will be n plus m. In this way we have to take. मतलब क्या, existing size आपकी n है, न्यू साइज मतलब कितने ज्यादा नंबर आपको इसमें ऐड करने हैं, वो है m. तो टोटल साइज विल बी n प्लस m, दैट इज एग्जिस्टिंग साइज प्लस न्यू साइज, मतलब एक्सटेंडेड साइज. तो n प्लस m लिखा है यहाँ. देन अगेन वी हैव टू एक्सेप्ट
m नंबर्स, पहले आपको कितने नंबर एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, m। ओके, तो यहाँ मुझे इसके क्वेश्चन पूछना है, तो मैं यहाँ फॉर लूप कैसे सेट करूंगा। सपोज आपको एग्जिस्टिंग डेटा मेंटेन करना है, प्रिजर्व करना है, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, या i के लिए इनिशियल वैल्यू क्या होगी। देखो ये हमने फर्स्ट एरे p में हमने कहां तक डेटा स्टोर किया है, स्टोर द डेटा अप टू n, मतलब n तक डेटा स्टोर किया है। मीन शॉर्ट, इफ द वैल्यू ऑफ n इज 5, दैट मीन्स वी हैव स्टोर द डेटा अप टू 5, दैट मीन 0 1 2 3 4 तक हमने स्टोर किया है। ओके, मीन्स इफ यू वांट टू मीन्स आफ्टर रीअलोकेशन दैट मेमोरी स्पेस, हमें उसी एरे में डेटा स्टोर करना है, तो हम कहां से स्टोर करेंगे। इट विल बी फ्रॉम 4 तक तो डेटा है, तो इट विल बी फ्रॉम 5। कहां से स्टोर करेंगे, 5 से। तो यह क्या लिखना पड़ेगा, 5 मतलब किसकी वैल्यू रहेगी, n की। तो मैं लिख रहा हूं n। हेलो हेलो, एनी प्रॉब्लम, समझते का काय। हेलो सर तुमचा आवाज नाही येते. हेलो, नाही येते का, आता येतोय। हेलो, आता येतोय का। हो येतोय, पण क्लिअर नाही येते. नाउ इज इट क्लियर नाउ। हेलो, येस. ओके, फर्स्ट लेट मी टाइप, देन आई विल एक्सप्लेन। पहले मुझे एक्सप्लेन टाइप करने दो, देन एक्सप्लेन करता हूँ। दस स्टूडेंट्स ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं लेंगे हम उनको अभी, उनको हमने पहले ही बोला है ना कि बाबा 10 o'clock आपको ज्वाइन करना है, 10 मिनट तक हम वेट करते हैं ना। Okay, now I'm compiling this application. I'm saving this application first. I'm giving name to this application, reallocation demo. Sir, comma before I plus 1 in print statement. Where where it is, yes. Okay, then compilation, one error is there. What is it, bracket missing, comma missing. Okay, that application I have compiled. Now I am executing this application. First, existing size, that is how many initially I am entering the value for n is 5, then it will accept 5 numbers, 1 2 3 4 5. Then after accepting 5 numbers, see where that numbers will be stored. One number will get stored at 0th location, then 2 number will get stored at 1, then 3 will get stored at 2, then 4 will get stored at 3, then 5 will get stored at 4th location in array p. तो 0 से स्टार्ट हो गया, 4 तक तो डेटा स्टोर हो गया। ओके, इफ द वैल्यू ऑफ n इज 5, देन नया जो डेटा हमें स्टोर करना है वो कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, 5 से। तो अभी इसमें से एग्जिस्टिंग डेटा हम मेंटेन कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। देन इट इज एक्सेप्टिंग हाउ मेनी मोर नंबर्स, अगेन माय आंसर इज 5,
I want to store 5 more numbers. Initially I have stored 5, now I want to store 5 more numbers. Then it will accept enter number 6, then suppose that number is 7, then 2, then 90, then 12, and then 45. Then total numbers are, okay, इसमें स्पेस देना भूल गया, फिर रन करेंगे. Here dash t. How many existing sizes? 5. 1, 2, 3, 4, 5. How many? Again 5. Then 6, 7, 8, 9, and then 10. Then total numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That is input and output section. Hello? Any problem in input and output? No, sir. Okay. देखो या क्या है, it is very simple. First, what we have to do, we have to accept size. That is how many numbers, that range value we have to take from an user. That means we have to accept size first. Then here that size I have accepted in variable n. Then by using malloc function, I have allocated that much memory space to the pointer variable. Then after that, I have accepted n numbers. If the value of n is 5, that means 5 numbers I am accepting from an user and I am storing them into the array p. एक हमारा काम हो गया. 5 n के लिए वैल्यू ली थी, 5 नंबर हमने यूजर से ले लिए और उनको हमने पॉइंटर एरे p में स्टोर किया. देन उसके बाद हमें क्या करना है, अगेन कितने नंबर हमें ज्यादा चाहिए. ओके, 5 तो हमने पहले स्टोर किए. हाउ मेनी यू वांट मोर, देन दैट वैल्यू आई एम एक्सेप्टिंग इन वेरिएबल m. तो नए ज्यादा कितने चाहिए हमें, 5 चाहिए. तो एग्जिस्टिंग कितने, वो भी 5 है. तो कितने टोटल हो गए, total will be 10. That is n plus m. So n plus m will be the new size, new memory space that I want to allocate to the pointer variable p. So here by using realloc function, I am extended memory space to n plus m. N means existing and m means more. So total memory space will be n plus m. तो मैंने इतना सारा अलोकेट किया कौन से वेरिएबल को, पॉइंटर वेरिएबल p को. तो यहाँ मैंने p को लिए वो वैल्यू स्टोर की. देन वी हैव टू एक्सेप्ट मोर नंबर्स. मतलब पहले हमने कितने एक्सेप्ट किए, फर्स्ट वी हैव एक्सेप्टेड n. देन हाउ मेनी यू वांट टू एक्सेप्ट मोर m, तो उसी लोकेशन पे स्टोर करना है. सो आई हैव स्टार्टेड दैट फॉर लूप फ्रॉम n, नॉट 0. If you start that for loop from 0, then existing data will be lost. Existing data क्या होगा, आपका लॉस होगा, बिकॉज नया डेटा हम उसी लोकेशन पे स्टोर कर रहे हैं. तो एग्जिस्टिंग डेटा आपका लॉस होगा. तो 0 to n-1 तक एग्जिस्टिंग डेटा है, तो नया डेटा आपको स्टोर करना है. सो वी कैन स्टोर इट, बट दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम n, not 0. n क्यों लिया हमने, बिकॉज n-1 तक डेटा है. if the value of n is 4, if the value of n is 5, तो कहां तक डेटा हमने स्टोर किया है, 0 to 4 तक. अभी n की वैल्यू 5 है, तो 0 to 4 तक डेटा हमने स्टोर किया. if the value of n is n, then we are storing the data up to n-1. and new data if you want to store, then that data we have to store from n to upper value. तो यहाँ हमने i के लिए इनिशियल वैल्यू क्या दी है, n. बिकॉज n-1 तक पहला डेटा है, तो नया डेटा कहां से स्टार्ट होगा, n से. ठीक है, तो ये फॉर लूप लिया, दैट इज फॉर मोर नंबर्स. तो उतने सारे ज्यादा नंबर एक्सेप्ट किए और जितने सारे नंबर हमने यूजर से लिए सभी को हमने यहाँ क्या किया है, डिस्प्ले किया है. दैट इज आवर क्वेश्चन. एनी प्रॉब्लम? हेलो? No, sir. ओके, एक बार रीड करो कि यहाँ मैंने n से क्यों स्टार्ट किया है. तो आपको लोगों को इतना याद रखना पड़ेगा, n इज एग्जिस्टिंग मेमोरी स्पेस एंड m मतलब मोर नंबर. तो टोटल स्पेस विल बी n प्लस m, ऐसा रहता है. ओके, तो यहाँ n-1 तक एग्जिस्टिंग डेटा है, मतलब n की वैल्यू 5 है, तो 4 तक तो डेटा है उसमें, तो नया डेटा आपको 5 से स्टोर करना पड़ेगा. तो यहाँ i इक्वल टू क्या लिखा है, n लिखा है. ठीक है,
नाउ राइट नेक्स्ट, आपने लिखा है क्वेश्चन, प्रोग्राम लिखा है आप लोगों ने? हेलो, हैव रिटन दिस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, then write question, write a C program, write a C program to accept n numbers, to accept n numbers from user, to accept n numbers from user, comma, extend memory space up to m, extend memory space up to m, up to m, comma, accept the numbers, accept the numbers, and display only, and display only, and display only even numbers from the list, and display only even numbers from the list. n नंबर लेने हैं, देन पॉइंटर वेरिएबल मतलब साइज पहले n लेनी है, अलोकेट करनी है पॉइंटर वेरिएबल को, उसके बाद उसके मेमोरी स्पेस एक्सटेंड करनी है m तक, देन फिर नंबर एक्सेप्ट करने हैं और उसमें से सिर्फ इवन नंबर को डिस्प्ले करना है. दैट इज आवर क्वेश्चन. ओके, स्टार्ट राइटिंग. सेम क्वेश्चन वी हैव टू राइट, सेम है. Instead of displaying all the data, what we have to do, we have to display only even numbers.
Same application we have to write here only while displaying. We have to check that number is even or not. Then for that, what we have to do? We have to divide that number by 2. And after division, if you will get 0 remainder, then that number will be even. And that number only we have to display. हो गया आपका? Is it done? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now one more function we have to discuss. That is the last. That is pre-function. Right. Dividing pre-function. We discuss malloc. We discuss calloc. We discuss realloc. Now we have to discuss pre-function. Again, it is related with dynamic memory allocation. Its syntax is pre and one pointer variable we have to pass. See what is its use? It is used for memory deallocation. Malloc, calloc, they are used for memory allocation. Then realloc function is used for memory reallocation, and pre function is used to free the memory space. It is used to free the memory space. Once you allocated memory either by using malloc or calloc function, and after that, suppose if you want to free that memory space, then we can use free function. Okay, its syntax is free, and one pointer variable we have to pass to it. Then it will free the memory space which has been allocated by that pointer variable. Okay, then right there free. It is used to free the memory space. It is used to free the memory space. It is used to free the memory space. Free the memory space. Okay, then one example I am writing here. No need to write new one. You can use existing one. Then here only we have to call pre-function, and pointer variable we have to pass as a parameter. So we can write like this: pre and then pointer variable. Actually, we have already written that application. So before get ch only we have to call pre-function. Okay, don't call pre-function in the beginning of an application. We have to call pre-function at the end of an application. आपको सबसे लास्ट में उसको कॉल करना है. देन एक बार हमने पॉइंटर वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट की, देन
उसमें डेटा स्टोर किया, then memory space हमने extend की, and after that suppose if you don't want that memory space or if you don't want that data, then directly we can call to the pre function, then it will pre that memory space, and then new variable or next variable or other variable can use that memory space. हमने सपोज हमने प्रोग्राम में पॉइंटर वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट की, उसके बाद उसमें डेटा स्टोर किया, हमारा पूरा काम हो गया है. देन एट द एंड सपोज आपको लगा कि नहीं अभी इसके बाद हमें वो मेमोरी स्पेस नहीं चाहिए, then directly we can call to the pre function, then it will free the allocated memory space. Okay, तो मेमोरी वो फ्री हो जाएगी, दूसरा कौन सा भी वेरिएबल या दूसरे प्रोग्राम के लिए वो मेमोरी स्पेस विल बी यूजफुल. Okay, and where we have to call pre function at the end of an application. लास्ट में ही आपको कॉल करना है, पहले कॉल मत करो नहीं तो हमारा डेटा लॉस हो जाएगा. Is it clear to all? Hello? Yes, sir. Yes, very good. Yes, sir. Okay, then my question is, या एक क्वेश्चन है मेरा, what is DMA? What is DMA? How it is differ from static memory allocation? How it is differ from static memory allocation? Explain DMA functions in brief. Write down that question. That will be for 4 marks. What is dynamic memory allocation? How it is differ from static memory allocation? And explain DMA functions in brief. That is for 4 marks. Then second question, differentiate between malloc and calloc function. Okay. Then after writing 2 questions, answer for the both the questions we have to write in your notebook, but that is your homework. Don't write here. Okay. Then algorithm. Give heading, small heading, algorithm. Then my question is, what is algorithm? Actually, people are knowing what is algorithm that you have learned in FY. So tell me what is algorithm. Anyone tell me what is algorithm? Step-by-step instruction to solve a problem. Yes, very good. Okay, step-by-step instructions. That is nothing but algorithm. But for what? For solving problem or to find the solution. Okay, if you want to find solution to any problem, then we have to write algorithm. We have to use an algorithm. What is a problem? Problem is any query, any issue, and if you want to solve it, then for solving any problem, if you are writing step-by-step solution, okay, if you are writing step-by-step solution, then you will get final solution to that problem. That is nothing but algorithm. Means step-by-step instructions. Step-by-step instructions you have to write for the solving the problem. That is nothing but algorithm.
finite number of steps. What is the actual definition? Finite number of steps are used to solve a problem that is nothing but algorithm. Steps must be finite. Means if you want to find the solution to any problem, then you can write the number of steps, but that steps must be finite. You cannot write number of steps. You cannot write much number of steps. Means suppose if you want to find the solution to the problem, then some time limit we have to set. Okay, means up to 1 hour, 2 hour, up to 30 steps, up to 10 steps, up to 15 steps, we have to find the solution to the problem. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन हमें फाइंड करना है और हम स्टेप लिख रहे हैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन कितने भी दिन हो गए स्टेप ही लिख रहे हैं सोल्यूशन नहीं मिल रहा है. It should not be like that. Means if you want to find solution to any problem, then what we have to do? We have to write the instructions. We have to write the steps, but that steps must be finite. So definition is finite number of steps are used to find solution to the problem, and that is nothing but algorithm. The finite number of steps are used to find solution to the problem, that is nothing but algorithm. Okay, then characteristics. What are the characteristics of an algorithm? That also people should know. Then tell me characteristics. Number one, anyone? कोई भी बोल सकते हो. Characteristics of an algorithm. Number one, पहली कौन सी characteristic है? Yes. First characteristic is input. Okay. देन ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम रहते हैं. देयर आर नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स कि जिनको इनपुट नहीं रहता है या इनपुट दिया तो भी चलता है. ओके, सो इनपुट कैन बी 0 और मोर. Input can be 0 or more. And suppose if you want to write an algorithm, and suppose if you don't want to give any input to that algorithm, then also okay. ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं कि जिनके लिए हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है लेकिन वहाँ इनपुट की जरूरत नहीं रहती है. देन वो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक ही है. ओके, इनपुट कैन बी 0 और मोर. ओके, इनपुट कैन बी 0 और मोर. देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज आउटपुट. Second characteristic is output. Each and every algorithm should generate at least one solution. Each and every algorithm should generate at least one solution. Means what? We are writing an algorithm. We are writing an algorithm for what? For finding the solution. हम algorithm क्यों लिख रहे हैं? Because हमें solution find out करना है. Algorithm लिखने के बाद हमें solution ही नहीं मिल रहा है. Then why we are writing that algorithm? Okay, means what? Output at least one solution should be there. कम से कम एक solution वहाँ चाहिए. Multiple कितने भी solution हो सकते हैं. If there are multiple solutions, then we have to select optimal solution. बहुत सारे solution है तो हमें optimal चाहिए. मतलब हमारे लिए base कौन सा है वही हम ले लेंगे. Means algorithm. What is algorithm? Step by step instructions are used to find solution to the problem. That is nothing but algorithm, and steps must be finite. That is finite number of steps are used to find solution to the problem. That is nothing but algorithm, and lot of characteristics are there. First one is input. Input can be 0 or 1 because lot of algorithms are there. To them we are not giving any input. And what is about output? At least one solution must be there. Any number of output can generate that algorithm, but at least one must be there. Okay, then third one is finiteness. Finiteness. What is the meaning of finiteness? Means number of steps must be finite. Okay, number of steps must be limited. ऐसा नहीं हो सकता है कि दिन भर हम algorithm ही लिख रहे हैं, लिखते जा रहा है, solution ही नहीं मिल रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. Okay, so the steps must be finite. In an algorithm, the steps must be finite. Then fourth one is, tell me fourth one. Sir, effectiveness. Yes, define वो भी चलेगा. Effectiveness. Who will tell effectiveness क्या रहता है?
इफेक्टिवनेस में क्या होगा? इफेक्टिवनेस में एनीवन? यस, नो प्रॉब्लम. इफेक्टिवनेस मीन्स ईच एंड एवरी स्टेप जो हम लिख रहे हैं, जो हम कुछ इसमें स्टेप में लिख रहे हैं, वो इट शुड बी इफेक्टिव. मतलब वहाँ क्या वो ऐसा इफेक्टिव होना चाहिए. मतलब वो ड्राइंग है तो सपोज हम कौन सा भी चार्ट ड्रॉ करते हैं तो वहाँ लेबल वगैरह रहता है उसमें, बराबर. वहाँ सपोज हम मैप भी ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें लेबल दे दिया हमने, देन इट विल बी इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो ऐसा होना चाहिए. इफेक्टिवनेस का मीनिंग वही रहता है कि जो कुछ हम ड्रॉ कर रहे हैं, जो कुछ हम लिख रहे हैं, फॉर दैट इफेक्टिव इक्विपमेंट शुड बी देयर. मतलब हमको लिखना है, ड्राइंग करना है तो पेंसिल मस्ट बी देयर, इरेजर मस्ट बी देयर. और जो कुछ हम ड्रॉ कर रहे हैं, वह मैप ड्रॉ कर रहे हैं तो हर एक के लिए कैप्शन चाहिए, लेबल देना चाहिए. that comes under in effectiveness. And last one is definiteness. definiteness का मीनिंग क्या रहता है? each and every step must be clear. each and every step must be clear. हम ऐसे नहीं बोल सकते do the addition of the numbers. do the addition of the numbers. Suppose I want to do the addition of 5 numbers and वहाँ सिर्फ मैंने लिखा है do the addition of the numbers. तो कितने नंबर है वो वहाँ हाइड किया जाता है. It is not clear. Suppose if you want to do the addition of 5 numbers, then step must be do the addition of 5 integers. इसको क्या बोला जाता है? Definiteness. ओके. वहाँ बोला है कि कैलकुलेट एरिया ऑफ शेप. कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेप. लेकिन कौन सा शेप है, वेदर इट इज अ ट्रायंगल, वेदर इट इज अ रेक्टेंगल, वेदर इट इज अ सर्कल, वो मेंशन नहीं किया है. ऐसा नहीं होना चाहिए. देन व्हाट इज द डिफाइनाइटनेस? डिफाइनाइटनेस मींस it must be, each and every step in an algorithm must be clear. It should be well defined like that. Means suppose if you want to calculate area of circle, then step must be like that to calculate area of circle like this. Is it clear? Definition and characteristics, that is properties. Hello. Yes, sir. Okay. Then anyone tell me definition of an algorithm. कोई भी बोल सकते हो algorithm की definition. Finite number of steps are used to find a solution of problem. Yes, very good. Then a lot of characteristics are there. Then what is about output? Anyone tell me output characteristic of an algorithm? Each and every algorithm should be generate at least one solution. Yes, very good. बाकी स्टूडेंट में आंसर दे सकते हो. किसी को बोलना मना नहीं है, आप आंसर दे सकते हो. ओके. Then it's 5 minutes are remaining, so all of you can put your roll numbers in chat box and you can leave the meeting. A good student, you have to write roll number like this, AK, and then your roll number. Pimpri students, directly you can put the roll number.